रिवाइज कीजिए 21.3.1 generation and conduction of nerve impulse. बताइए क्या न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं? न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स क्यों होते हैं? Do you know why the membrane of a neuron is polarized? बताइए क्या डिफरेंट टाइप्स के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन पर? ये आयन चैनल्स क्या सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं टू डिफरेंट आयंस? जब न्यूरॉन्स इंपल्स को कंडक्ट नहीं करते हैं तो बताइए यह किस आयन के लिए परमिएबल होते हैं और किस आयन के लिए नियरली इम्परमिएबल होते हैं? when the or when a neuron is not conducting any impulse that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to dash dash ions and nearly impermeable to sodium ions. Similarly, वह मेम्ब्रेन बताइए क्या इम्परमिएबल होता है टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म? Consequently, the dash dash inside the axon contains high concentration of potassium ion and negatively charged proteins and low concentration of sodium ion. In contrast, the fluid outside the axon contains a low concentration of dash dash, a high concentration of sodium ion, and thus form a concentration gradient.
यह आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन किसके द्वारा मेंटेन्ड होता है? जी हाँ, किस ट्रांसपोर्ट द्वारा मेंटेन होता है? बताइए, आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन किसके या फिर किस पंप के द्वारा मेंटेन होता है? और यह पंप कितना सोडियम आयन आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है और कितना इनटू द सेल ट्रांसपोर्ट करता है? कितने सोडियम आयन आउटवर्ड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 पोटेशियम आयन इनटू द सेल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है? As a result, the outer surface of dash dash possesses a positive charge while its inner surface becomes negatively charged and therefore is polarized. बताइए, रेस्टिंग पोटेंशियल किसको कहा जाता है? The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as the dash dash. Figure 21.2 diagrammatic representation of impulse conduction through an axon at point A and point B का माइंड कैप्चर कीजिए। You might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon. When a stimulus is applied at a site, figure 21.2, example point A, on the polarized membrane, the membrane at the site A becomes freely dash dash to sodium ion. This leads to a rapid influx of sodium ion followed by the reversal of the polarity at that site. That is, the outer surface of the membrane becomes
dash dash charged, and the inner side becomes positively charged. The polarity of the membrane at the site A is thus reversed and hence dash dash. The electrical potential difference across the plasma membrane, जी हाँ, across the plasma membrane at a site A is called the dash dash potential, which in fact termed as a nerve impulse. जी हाँ, nerve impulse. At sites immediately ahead, the axon example site B, membrane has a positive charge on the outer surface and a negative charge on its inner surface. As a result, a current follows on the inner surface from site A to site B. On the outer surface, current flows from site B to site A. Figure 21.2. To complete the circuit of current flow, hence the polarity at site is reversed and an action potential is generated at site dash dash. Thus the impulse, that is action potential, generated at site A arrives at site B. The sequence is repeated along the length of the axon, and consequently the impulse is conducted. बताइए, क्या raised in the stimulus induced permeability to sodium ion is extremely short-lived? It is quickly followed by a rise in permeability to dash dash ion. Within a fraction of a second, dash dash diffuses outside the membrane and restores the resting potential of the membrane at the site of excitation, and the fiber becomes once more responsive to further dash dash.